ओके, तो अभी आज के इस लेक्चर के अंदर हमको जो इलिप्स के हर एक किसी भी पॉइंट्स का फोकल डिस्टेंस जो होता है उसके बारे में हमको बात करनी है. सो लेट अस टॉक अबाउट द फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इन जनरल. सो यस, जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि समझो ये इलिप्स है. ओके, ये सपोज इलिप्स है. तो ये जो है ये सपोज फोकस है, फर्स्ट फोकस वी कैन से, we can call it as S1. Okay, and there is another focus S2 here, ठीक है, which are on the same lines in this way. Okay, तो ये हमारा S2 हो गया. This is called as the, अभी इस फोकस के लिए ना, ये फोकस S1 जो है उसको अगर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, forget about S2 and just concentrate on S1. So for this focus S1, this point will be denoted by A. Okay, इसको हम A बोल सकते हैं और इस पॉइंट को हम बोलेंगे B. यस, सो अभी इसमें ये जो पॉइंट A है तो उसका डिस्टेंस जो है इस S1 से, तो उसको हम अगर बोल देते हैं R1. ओके, R1 is going to be the distance of this A from S1. Okay, and at the same time the distance of this B from S1 will be denoted by R2 as well. So this distance is actually going to be R2, you can see. Yes, now ये तो हमको ऑलरेडी पता है कि R1 plus R2 is actually going to be equal to 2A. ये तो समझ सकते हैं आराम से, बिल्कुल. But how many of you know that this R1 is also going to be same as this R1 here? Just check. So since this R1 in ये जो S2 का B से डिस्टेंस जो है वो भी R1 के बराबर ही रहने वाला है. By symmetry, obviously the ellipse whatever it may be will be symmetric. बिल्कुल, तो सिमेट्रिक होगा जरूर. और इसी रीजन की वजह से यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होता है S1 और S2 के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो कि हमने कल निकाला था 2C के बराबर, तो वो 2C ये डिस्टेंस हमने देखा था S1 और S2 के बीच में. लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो वो डिस्टेंस R2 माइनस R1 के बराबर भी तो है जरूर. तो इसमें हम देख सकते हैं कि R2 minus R1 is actually going to be 2C. Do you agree with this? And since it is this, we can just add these two equations together so as to get this R1 minus R1 cancelled, so as to get this as 2R2, which is going to be equal to 2C, yeah, 2A plus 2C, correct? And now if we just divide this whole thing by 2, then we can get this R2 to be simply equal to A plus C. Yes, very good, Prashant. R2 is going to be equal to A plus C. Even in the diagram also, we can see clearly that this R2 is going to be the sum of, क्योंकि यहाँ पे बीच में जो है वो सेंटर रहने वाला है, या ओरिजिन उसको हम बोल सकते हैं. सेंटर ऑफ इलिप्स इज O here. सो सेंटर से ये जो S2 का जो डिस्टेंस है वो कितना रहता है, C रहता है, ये तो सबको पता है. और R2 अगर हमको निकालना है, सॉरी, ये डिस्टेंस भी C रहता है जरूर. S1 का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो भी C रहता है. तो अगर R2 हमको निकालना है तो हम देख सकते हैं कि दिस R2 is actually going to be the sum of this distance and this distance here. Out of that, this distance is nothing but A, करेक्ट है, ये A है हमारा. और जबकि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस हमको दिख रहा है वो तो C है, तो इसलिए इस A और C को अगर हम ऐड करेंगे तब जाके हमको R2 मिलेगा. वो तो सीधी बात है, बिल्कुल. But what about R1? Can you find out how we got this R1? R1 is going to be obtained by just subtracting this whole distance minus this much only. Check. तो इस A में से अगर हम इस C को अगर हटा देंगे तो हमको ये वाला डिस्टेंस मिलेगा. चेक करो ठीक से. तो we can call it as A minus C. Very good, correct. Very good, Prashant, again. So that means we can say that R1
is actually going to be A minus C. ये भी अच्छी तरह से याद रख लो. And obviously we can also get this equation just by subtracting these two equations. See here, यहाँ पे R2 plus R1 is equal to 2A. ऐसा हमने इसको लिख दिया इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को हम एज इट इज कॉपी करेंगे, that is R2 minus R1 is equal to 2C. And now if we just subtract these two equations, so here it will be a minus sign, here again there will be a plus sign, and here it will be a minus sign here, so that this R2 this time gets cancelled from both the equations, and this R1 get added up together so as to become 2R1, and hence it becomes 2A minus 2C. And if we just divide this whole thing by 2, then we can get this equation as a final. करेक्ट है? सो ये R1 और R2 की जो वैल्यूज है वो अच्छी तरह से याद रख लो. R1 is the distance of the perigee. What this A is called? S1 के लिए इस A को हम बोलेंगे perigee, or it is also called as a perihelon. Remember. And this B actually is also called apogee, or it is also called as the apollon. Yes. So what is the distance of perigee? R1, which is going to be equal to A minus C. And at the same time, what is the distance of apogee? Which is going to be equal to A plus C. No doubt. But as we have already seen that C upon A is going to be E. Hence we can get that C is going to be equal to AE. So if we just replace it by that, then we can get this as A minus AE, where A can be taken common and we are left with 1 minus E. And even we can also express this R2 in terms of E, that is A plus C, where C is going to be AE once again. And hence we can get this AE, so that if A is taken common, then we are left in the bracket 1 plus E as a final. And hence R1 and R2 can be obtained like this. And if we can also get the ratio of R1 is to R2, if we take the ratio, then A gets cancelled and we are left with 1 minus E upon 1 plus E. So if E is given, then we can find out the ratio of R1 is to R2. ये एक बात अच्छी तरह से नोट करके लो, ठीक है? This is going to be the basic concepts which are about ellipse. Yes, तो ellipse के बारे में ये basic concept तुमको पता होने जरूरी है, जो कि थोड़े difficult MCQs जो होते हैं तो उसके अंदर तुमको काम में आएंगे जरूर. यस, तो अभी देखो इसमें ये हमने बेसिक कंसेप्ट इलिप्स के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट हमको डिस्कस करने थे वो ये है. अभी हम देखेंगे केपलर्स लॉज. ओके, तो सबसे पहला जो केपलर लॉ है वो यही कहता है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद सन सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स फोकाई. तो मतलब हर एक प्लैनेट जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, जिसमें सन जो है वो एक फोकस के ऊपर प्रेजेंट होता है, ना कि सेंटर के ऊपर. हियर विल बी द सन एंड हेंस द प्लैनेट विल बी रिवॉल्विंग लाइक दिस अलोंग द इलिप्स. तो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर सन प्लैनेट घूम रहा होगा, बट इसमें क्या है कि सन जो है वो सेंटर पे यहाँ पे सिचुएटेड नहीं है, सेंटर पे कुछ भी नहीं है, बल्कि यस आइदर F1 और F2 और आइदर S1 और S2, दोनों में से किसी भी एक फोकस पे सन सिचुएटेड हो सकता है. बट सन विल बी सिचुएटेड एट फोकस, नॉट एट द सेंटर. ये कहने की इंपॉर्टेंट बात है. आइदर इट मे बी एट S1 और इट मे बी एट S2, नॉट एट बोथ एक्चुअली एट अ टाइम, बट सन विल बी सिचुएटेड. अभी होता ऐसा है, देखो अभी सपोज ये सन है, ठीक है, the sun will be situated at this first focus for
some planet, एक planet के लिए हो सकता है कि ये sun जो है वो first focus पे situated है, S1 पे situated है, लेकिन दूसरे planet के बारे में हो सकता है ऐसा कि ये sun जो है वो S2 पे situated है, ऐसा हो सकता है. This is another planet actually. Maybe that this is the Saturn and this is the Jupiter. तो जुपिटर के लिए जो सन है वो S1 पे सिचुएटेड है, तो ये हम समझ सकते हैं यहाँ पे. और सैटर्न के लिए देख सकते हो सन जो है वो S2 पे सिचुएटेड है. सन तो वही है लेकिन इट इज सिचुएटेड एट अ डिफरेंट फोकाई ऑन द ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स. सो अलग अलग प्लैनेट्स के लिए, कुछ प्लैनेट्स के लिए सन जो है वो S1 पे सिचुएटेड होगा, सेम ऐसे ही. या कुछ प्लैनेट्स के लिए हो सकता है कि सन जो है वो दूसरे किसी फोकस पे सिचुएटेड होगा, इस तरह से. इट डिपेंड्स, मतलब ये होता रहता है. इट में दैट इज नॉट ए मोस्ट important thing actually. It is not important which focus the sun is situated at, but the important thing is that sun is situated at one of the foci. Okay. तो किसी ना किसी एक फोकस पे सन सिचुएटेड होता है, ये हमको इसमें समझने की बात है, याद रखो ठीक से. अभी चलो ठीक है, सन सिचुएटेड है एट वन ऑफ द फोकाई, नो डाउट, वो तो हमने समझ लिया. फिर अगर जबकि ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्रिटिकल वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वो फेल हो जाता है. जो हमने बताया था कि क्रिटिकल वेलोसिटी इज अ वेलोसिटी with which the satellite can revolve in circular orbit, but here the planets or a satellite is not revolving in a circular orbit, so it is not moving with the critical velocity, but its velocity will be changing from time to time. ये हमको अच्छी तरह समझना है. सो द क्रिटिकल वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए डिफाइन नहीं किया जा सकता है. इट इज नॉट द फॉर इलिप्टिकल ऑर्बिट, क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर रेडियस कांस्टेंट है ही नहीं ना. रेडियस यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो ऐसे केस में फिर क्रिटिकल वेलोसिटी का कंसेप्ट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. द प्लैनेट विल हैव अ वेरिएबल वेलोसिटी हियर इन केस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट. रिमेंबर, the planet always moves with variable velocity. The velocity of the planet goes on changing from point to point, time to time. So if we see carefully, the velocity of the planet becomes maximum when it comes closer to the sun. That means at perigee. Okay, perigee पे जब वो आता है तो उसका velocity सबसे ज्यादा हुआ करता है. We can call it as v1. Okay, and when it goes away from the sun, so when it is at the maximum distance from the sun, at that time its velocity is going to be minimum 1. That is, we can denote it by v2 here, like this. So the velocity goes on changing, and the velocity in between here will be between v2 and v1. Obviously it will be greater than v2 and less than v1. तो उसका velocity जो है वो v1 से बड़ा कभी नहीं बनने वाला है, और उसका velocity जो है वो v2 से छोटा कभी नहीं बनने वाला है. It will vary between v1 and v2 only, but it will go on increasing as the particle moves from this point. तो अब यहाँ पे सपोज यो यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ पे यहाँ तक जाता है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो जैसे जैसे वो यहाँ पे जा रहा है तो उसका वेलोसिटी जो है वो बढ़ता जाएगा. सो इक्वल इंटरवल्स अगर देखेंगे तो इट विल जस्ट गो ऑन इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी. दैट मीन्स उसका जो वेलोसिटी है उसका जो वेलोसिटी है वो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोज सबसे कम वेलोसिटी उसका यहाँ पे रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे हम इक्वल इंटरवल्स पे अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स हमको मिलेंगे, नो डाउट. लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो वैसे वैसे उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा. सो इट विल गो ऑन मूविंग फास्टर as it comes closer to the sun here, and it will have a very high velocity at this point near the sun, and it will move with a very fast speed. But as it goes on moving away from the sun, once again its velocity goes on decreasing and becomes smallest when it comes closer to the sun. That means if we just check here, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ठीक से, तो if you see the line joining this sun and the planet, if you focus on that, तो ये लाइन जो ज्वाइन कर रहा है सन को और प्लेनेट को, ये लाइन सपोज, तो ये लाइन जो एंगल सपोर्ट करता है या जो एरिया वो सपोर्ट करता है उसके ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो देख सकते हो कि एरिया स्वेप्ट बाय दिस लाइन joining the sun and planet will sweep out equal areas in equal intervals of time. Yes.
equal areas in equal intervals of time. That means whatever area is swept out by the planet in this portion, in this time delta t here, the same area will be swept out here also. तो जब ये planet यहाँ पे आएगा तो it will increase its speed and लेकिन वो बहुत नजदीक आ गया है ना, तो नजदीक आने की वजह से उसको बहुत तेजी से भागना पड़ेगा ताकि वो उतना ही एरिया कवर कर पाए उसी टाइम के अंदर जितना उसने यहाँ पे किया था. That is the Kepler's second law of motion, we can say planetary motion here. So what does Kepler's second law of planetary motion tells us? Simply it is that the aerial velocity, that means dA by dt, always remains constant for every planet. ठीक है, तो कोई भी planet के लिए अगर देखेंगे तो dA by dt remains constant all the time. All the time means अगर यहाँ पे वो इतना यहाँ पे जब वो अपोजी पे होता है तो उस समय वो ऑलरेडी बहुत दूर है, तो अगर थोड़ा भी डिस्टेंस अगर वो कवर करेगा, ट्रेवल करेगा, तो उस केस में वो बहुत ज्यादा एरिया कवर कर पाएगा, बहुत ज्यादा एरिया स्वीप आउट कर लेगा, नो डाउट. लेकिन जब वो नजदीक आएगा, पेरिजी पे आएगा, तो जरूर उसको बहुत तेजी से भागना पड़ेगा, उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ताकि वो उतना ही एरिया कवर कर पाए जितना उसने यहाँ पे किया था, क्योंकि वो दूर होने से कम डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा तो भी ज्यादा एरिया कवर हो जाएगा, लेकिन नजदीक आने से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ही उतना एरिया वो कवर कर पाएगा. इसलिए हमको ये समझना है कि नॉर्मल वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट. ठीक है, जैसा कि सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर होता है, सर्कुलर ऑर्बिट अगर है तो सर्कुलर ऑर्बिट में हमको पता है कि स्पीड का जो वैल्यू है वो हम हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है, इधर जितना है, इधर इतना है, उधर जितना भी है, तो यहाँ पे हर पॉइंट पे स्पीड जो है वो कांस्टेंट ही रहता है, बिल्कुल. लेकिन वो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए ना, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए ऐसा होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर ऐसा नहीं होता है. इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर वेलोसिटी इज नॉट अ कांस्टेंट. रिमेंबर, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ कांस्टेंट, बट इट इज गोइंग टू बी अ वेरिएबल. रिमेंबर, तो ये अच्छी तरह से हमको याद रखना है. Velocity is not constant in case of elliptical orbit, but instead of that we can say that the aerial velocity is constant in case of the elliptical orbit even. उसका भी रीजन एक बता सकते हो आराम से कि when the planet will be at this point near the perigee here, तो अगर वो planet जो है वो अगर पेरिजी के नजदीक है, ये देखो सपोज यहाँ पे वो planet है या यहाँ पे है या यहाँ पे है, जब भी वो इस तरफ पेरिजी के नजदीक होता है तो होता क्या है ना कि उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट हो रहा है, इट विल बी अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर लाइक दिस. So the gravitational force acting on it will be directed in this direction here, and this gravitational force will have one component which is directed along the tangent of this elliptical path, which will accelerate its motion. उसका velocity भी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स का एक कंपोनेंट भी इस डायरेक्शन में है, जिसके कारण यहाँ पे उसका जो एक्सेलरेशन होता रहेगा एंड इट विल जस्ट गेट अट्रैक्टेड मोर एंड मोर टुवर्ड्स द सन बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन इट हियर. सो ये इस फोर्स का भी एक कंपोनेंट इस तरफ होगा. लेकिन जब वो दूर जा रहा होगा, जब यहाँ पे वो आएगा, बाय चांस सपोज द प्लैनेट इज एट दिस पॉइंट हियर, सो इन दैट केस द फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी हाँ हेलो, हाँ बोला. Yes. So basically, when it will be at this point here, which is far away from the sun, यहाँ पे जब वो होगा तो उस समय उसके ऊपर फोर्स कितना काम करेगा, देखो देखते हैं फोर्स कौन से डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में काम करेगा जरूर, और इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ काम कर रहा है, ठीक है ना, और वो मूव कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में वो मूव हो रहा है along the tangent. सो टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ वो जा रहा है और फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, and this component of the force will just try to deaccelerate its motion, retard its motion, and that's why its speed will be slowed down, and because of that it will go on moving with a more and more decreasing speed, and it will become smallest at this point here, and then it will go on increasing once again here. So aerial velocity remains constant, not the normal velocity remains constant, and this can be proved
on the basis of law of conservation of angular momentum. Remember, what does this law of conservation of angular momentum tells us? Law of conservation of angular momentum tells us simply that the particle which is performing a motion, rotational motion, if it is not acted by any external torque, then the total angular momentum always remains constant. Okay, remember the angular momentum is defined as the linear momentum into moment arm. Remember, ये उसका फॉर्मूला है, मोमेंट आर्म इनटू लीनियर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। याद रखिए से उसका फॉर्मूला जो है वो अगर हम सिंबल फॉर्म में लिखेंगे तो एंगुलर मोमेंटम विल बी डिनोटेड बाय L, which is actually going to be equal to linear momentum, which is going to be P, and moment arm will be denoted by R. So R into P, this is actually the formula for angular momentum. उससे भी आगे जाके अगर एक वेक्टर फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है तो हमको एक्सप्रेस करना पड़ेगा L bar is equal to R bar cross P bar. It is going to be the cross product of L and P already. ये हमको और डिटेल में देखना है 12th स्टैंडर्ड में, बट अभी फिलहाल जस्ट उसका कंसेप्ट ऐसा ही है कि whenever there is a particle performing circular motion, then its angular momentum will be given by R into P, where P stands for linear momentum. And already we know that this linear momentum P is going to be mass into velocity. So if we just replace by this value here instead of P, then we can get the final formula for angular momentum, which is going to be mvr. And what does this law of conservation of angular momentum tells us? That in case of the planetary motion, the angular momentum is always conserved. And from this statement, we can get another equation, which is very simple to understand. Once again here, see, suppose this is the elliptical orbit of a planet. This is the position of the sun, and suppose that this is the perigee and this is apogee. Okay, and suppose that the distance of perigee from the sun is going to be r1, as we have just seen, and suppose that the distance of this apogee from the sun is going to be r2, suppose, and the velocity of the planet at this perigee here is denoted by v1. Okay, so this is the velocity v1 of the planet at this perigee, but at the apogee the velocity of the planet will be denoted by v2. Suppose this is v2. Yes, so now we can see that the angular momentum L1 at the perigee, so we can call it as LP, is going to be same as the angular momentum at this apogee, which will be denoted by LA, which means that LP is equal to LA. But LP के लिए क्या फॉर्मूला देखा हमने, एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या फॉर्मूला देखा हमने, जस्ट देखो अभी हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम इज एक्चुअली इक्वल टू mvr. करेक्ट है, mvr, जैसा कि हमने यहाँ पे अभी देखा mvr. m मतलब मास ऑफ द प्लैनेट, v stands for the velocity of the planet, and r is the distance from the sun. Okay, तो अभी यहाँ पे देखो LP के लिए फिर क्या फॉर्मूला आएगा बताओ, it will be m into v1 into r1. Do you agree with this? Mass will remain constant because the same planet is moving along the orbit, right? And that is going to be actually equal to LA, where LA stands for the angular momentum at the apogee, which is going to be mvr once again, but m is the mass at that time, which is m only, into velocity at that point, which is v2, and the radius of the distance of this planet from the sun at apogee, which is denoted by r2 here. And hence we can just get m cancelled from these both equations, so as to be left with v1 into r1 is equal to v2 into r2. This is a $1 million equation. Remember, this is the equation which the MCQs may be asked on this here. So it says that v1 into r1 is going to be equal to v2 into r2, which means that if, since we can see clearly that r1 is less than r2, correct है, क्योंकि p मतलब क्या है, पेरिजी है, एंड पेरिजी का डिस्टेंस कितना हमने मान लिया है, r1 मान लिया है, और एपोजी का डिस्टेंस r2 है, तो पेरिजी मतलब क्लोजेस्ट पॉइंट और एपोजी मतलब farthest point. So obviously r1 is always going to be less than r2. So is the case that v1 is going to be greater than v2. That means the velocity at this perigee is going to be highest, and velocity at the apogee is going to be the lowest one.
and hence the ratio of velocities v1 upon v2 is actually going to be equal to r2 upon r1. That is the ratio of the distances from apogee to perigee. And one more thing is that we already seen that this r1 is actually a minus c and r2 is equal to a plus c. जस्ट अभी 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 हमने आज ही के ही लेक्चर में देखा, याद है आपको? तो अगर हम वो यहाँ पे डाल देंगे तो हम ये भी बोल सकेंगे कि v1 upon v2 is actually going to be what? r2 which is a plus c upon a minus c. उससे भी आगे जाके हमने c को अगर a into e अगर लिख दिया और a को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया तो v1 upon v2 can also be written to be simply equal to 1 plus e upon 1 minus e. So this is going to be the important formula. So if eccentricity of the ellipse itself is given, then we can find out the ratio of velocities at perigee and apogee. Or if suppose the velocity at perigee is given, then we can find out the velocity at apogee. Or if the velocity of apogee is given, then we can find out the velocity at perigee and so on like that. और even ये इक्वेशन यूज करके ये जो इक्वेशन हमारे पास है v1 r1 इक्वल टू v2 r2, इनमें से कोई भी तीन चीजें अगर दी रहेगी तो हमको चौथा चीज मिल जाएगा बिल्कुल. या सपोज r2 निकालना है और बाकी v1 r1 v2 दिया हुआ है तो मिल जाएगा हमको. इवन कभी अगर r1 और r2 दिया हुआ है और v1 दिया हुआ है तो v2 हमको मिल जाएगा आराम से. बिल्कुल कोई भी तीन चीजें दी है तो हमको चौथा चीज मिल जाएगा आराम से. उससे भी आगे जाके ये भी हमको पता होना चाहिए कि r1 प्लस r2 इज एक्चुअली इक्वल टू 2a. करेक्ट है, 2a. सो अगर हमको a दिया हुआ है, मतलब a अगर दिया हुआ है तो उस केस में हमको क्या मिलेगा? r1 अगर दिया है तो r2 मिल जाएगा, क्योंकि वी कैन से दैट द r2 विल एक्चुअली बी इक्वल टू 2a माइनस r1. ये सब चीजें आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर या एमसीक्यूज के अंदर यूज करनी पड़ेगी. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट and just learn all the formulae so that we can use them effectively in the MCQs whenever required. Okay, तो ये बात याद रखो ठीक से. और yes, अभी तीसरा लॉ जो है Kepler's third law, we can move to that, which tells us simply that okay, so Kepler's third law tells us simply that if suppose the planet is revolving in an elliptical orbit, once again here, suppose ये उसका elliptical orbit है और उसमें ये घूम रहा है, ये suppose सन है. तो जैसा कि हमने न्यूटन्स लॉज यूज करके ये प्रूव किया था अभी कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. याद है आपको? टी स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ इट्स सर्कुलर ऑर्बिट. बट यहाँ पे आर माना क्या था? रेडियस था, और वो भी किसके लिए वैलिड है? सर्कुलर ऑर्बिट के लिए वो वैलिड है. अगर कोई प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके लिए हम बोल सकते हैं रेडियस विल बी कांस्टेंट हियर इन दिस वे. ओके, तो रेडियस उसका कांस्टेंट होगा बिल्कुल. बट अभी यहाँ पे अगर सपोज अगर हमने यहाँ पे देखा कि इस इलिप्स के बारे में अगर देखा तो रेडियस का ऐसा तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं. देयर इज नो कंसेप्ट लाइक रेडियस, राइट? एंड दैट्स व्हाई इन दिस केस वी कैन से दैट वी कैन प्रूव दैट टी स्क्वायर मतलब द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट is directly proportional to the cube of semi-major axis of its elliptical orbit. Remember, तो t square is proportional to r cube इधर भी वैलिड है, लेकिन यहाँ पे r माना रेडियस नहीं है बल्कि it is the semi-major axis है. It is going to be the semi-major axis which will be denoted by a here. A here. Okay, so okay, so basically this is the third law of planetary motion. Yes, remember this correctly. Here A stands for the semi-major axis of elliptical orbit. Okay, semi-major axis मतलब याद है हमको क्या बताया था? ये देखो, ये सपोज ये पूरा अगर मेजर एक्सिस है तो मेजर एक्सिस कितना होता है? 2a होता है. If we consider the distance from the center only, तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस होता है
इसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस विच इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ए। तो ये ए होता है, इसके क्यूब के साथ ये टी स्क्वायर प्रोपोर्शन में होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर elliptical orbit. Semi major axis is very much important for the elliptical orbit. And now अभी चलो ठीक है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर इस टी एक के बदले सेमी मेजर एक्सिस अगर आपको डायरेक्ट नहीं दिया है तो इट कैन आल्सो बी फाउंड आउट। इफ सपोज r1 is the distance given here. हाँ सर, माझा लेक्चर चालू आहे actually. Okay, so this sun जो है, sun का distance from this one will be r1, and suppose the distance of sun from this another point will be r2 suppose, and if suppose this r1 and r2 are given in the numerical, then we can just we found out that r1 plus r2 is actually going to be 2a, correct है? And hence a becomes actually equal to r1 plus r2 upon 2, and this value of a can be put here in place of this a here, so as to get this as t square proportional to r1 plus r2, sorry, so r1 plus r2 upon 2, तो उसका क्यूब, यस। सो a के बदले हमने क्या डाल दिया, उसका वैल्यू डाल दिया जो कि r1 plus r2 upon 2 होता है। तो this we have to understand what is the significance of this semi major axis in case of an elliptical orbit here, and what does this Kepler's third law actually tells us. Okay, so t square proportional to r cube is this here, yes। चलो ठीक है, तो these are the Kepler's laws of planetary motion, and now we will talk about some another basic concept in this chapter, that is about the potential energy, but I think it will be somewhat not possible because of the time constraint. अभी 5 मिनट बचे हैं, तो चलो ठीक है, और एक कंसेप्ट, दूसरा एक कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं अभी, जो कि सर्कुलर ऑर्बिट के लिए ऑलरेडी हमने प्रूव किया है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, करेक्ट है? और इसमें हमने ये भी प्रूव किया है कि टी इज एक्चुअली इक्वल टू 2 पाई रूट आर क्यूब अपॉन जीएम, बराबर है? यस। तो अगर यहाँ पे हमने ये देखा, तो इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग करने से यहाँ पे क्या होगा देखो, तो टी स्क्वायर विल एक्चुअली बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपॉन जीएम, राइट है? और इससे भी आगे जाके अगर इसको हम ऐसा अगर लिखते हैं 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे और इसके साथ आर क्यूब यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम कांस्टेंट होने की वजह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि आर टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, नो डाउट। बट नाउ इफ वी जस्ट ड्रॉ अ ग्राफ between t square plotted on y-axis and r cube plotted on x-axis. Okay, so it will be a straight line. Yes, remember the graph between t square and r cube will always be a straight line, and this straight line will have a slope which is going to be this much here, that is 4 pi square upon gm. So remember that the slope of this graph, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमको मिलता है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स, ऐसे होता है। तो y मतलब ये y एक्सिस y कोऑर्डिनेट, और x मतलब x कोऑर्डिनेट, एंड m इज गोइंग टू बी एक्चुअली द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, राइट? सो y इज इक्वल टू mx। इसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो जबकि t स्क्वायर हमने y एक्सिस पे डाल दिया है, सो इट कैन प्ले द रोल ऑफ y, आर क्यूब को हमने एक्स एक्सिस पे डाल दिया है तो इट कैन प्ले द रोल ऑफ एक्स, नो डाउट। बट दिस quantity which is a proportionality constant here will play the role of m, that is the slope of the graph, and hence we can say that the slope of this graph will actually be equal to 4 pi square upon gm। ये अच्छी तरह से याद रखो। but at the same time ये भी याद रखो कि when this graph is there, then the if so suppose this graph makes an angle theta with the x axis, then the tan theta is also another formula for slope, remember। तो स्लोप का जो फॉर्मूला है और एक फॉर्मूला है tan थीटा, ये भी इसका एक फॉर्मूला है, रिमेंबर m इज इक्वल टू tan थीटा। सो इफ वी यूज दिस हियर, द स्लोप का एक फॉर्मूला tan थीटा है
और दूसरी तरफ स्लोप का एक फॉर्मूला 4π² भी है। तो इसको यूज करके अगर देखते हो हमारे पास अगर ऐसा एक क्वेश्चन अगर उनको पूछा जाता है जिसके अंदर अलग अलग सोलर सिस्टम के बारे में अगर T² और R³ के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया हुआ आपको दिखता है, सपोज दिस इज द T² प्रोपोर्शनल टू R³ ग्राफ, मतलब T² और R³ के बीच में ग्राफ दिया हुआ है अलग अलग सोलर सिस्टम्स के लिए। एक सोलर सिस्टम के लिए ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ ऐसा बन रहा है, दूसरी सोलर सिस्टम के लिए ग्राफ ऐसा है, और तीसरी सोलर सिस्टम के लिए ग्राफ ऐसा है। ठीक है, इन तीनों सोलर सिस्टम्स के अंदर हमको हम यहाँ पे नाम दे देंगे उनको ए, बी और सी। सपोज इमेजिनरी सोलर सिस्टम्स है, ओके, एंड सपोज दैट दिस फर्स्ट सोलर सिस्टम इज गोइंग टू हैव मास ma एट द सेंटर। तो अगर सपोज हम ये कंसिडर करते हैं तीनों सोलर सिस्टम्स के अंदर सेंटर में जो प्लैनेट है या सन जो है, तो उस सन का मास अलग अलग है। तो विच सोलर सिस्टम विल हैव हाईएस्ट मास ऑफ द सेंट्रल प्लैनेट? तो कौन से सोलर सिस्टम के अंदर के सोलर सेंट्रल प्लैनेट का जो मास है वो सबसे ज्यादा रहेगा? तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि वी कैन कंपेयर द स्लोप्स हियर। तो इसका जो स्लोप है, थीटा छोटा है तो इसलिए स्लोप भी कम आएगा, इसका थीटा ज्यादा है इसलिए स्लोप भी ज्यादा आएगा, और इसका थीटा सबसे ज्यादा है करके उसका स्लोप भी सबसे ज्यादा आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो स्लोप जो है वो इनवर्सली डिपेंड करता है कि नहीं मास के ऊपर। बाकी सब तो कांस्टेंट्स है, 4π² g is constant, but we can see that this slope is inversely proportional to the mass, and that's why if mass is smallest then slope must be maximum, and slope maximum होने का मतलब है एंगल थीटा must be maximum। तो किसका एंगल थीटा मैक्सिमम है? ए का। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस ए का स्लोप ज्यादा है, और ए का स्लोप ज्यादा होने का मतलब है ए का मास सेंट्रल प्लैनेट का सबसे कम है। तो वी कैन से दैट एम ए is going to be the smallest one, and b का जो है तो b का स्लोप थोड़ा उससे कम है, और स्लोप कम होने का मतलब मास ज्यादा हो गया। उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि एम बी इज एक्चुअली ग्रेटर देन दैट, एंड सबसे बड़ा मास किसके अंदर होगा? एम सी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे। सो मासेस के बारे में कंपैरिजन किया जा सकता है by just comparing the graph between T² and R³, remember। चलो ठीक है, so this is one point which is somewhat very deep actually, but we have to understand about the graphs। तो ग्राफ्स के बारे में एक और भी बेसिक सेशंस हमको लेने पड़ेंगे कुछ ग्राफ अंडरस्टैंड करने के लिए, मतलब ग्राफ रीड करने के लिए और प्लॉट करने के लिए, जो कि किस किस टाइप के अलग अलग ग्राफ्स हुआ करते हैं, और कौन से ग्राफ का रीडिंग कैसे करने का, और ग्राफ से किस तरह से इंफॉर्मेशन निकालने का, और कोई भी इंफॉर्मेशन ग्राफ के अंदर कैसे डालने का। ये सब एक कुछ बेसिक स्किल्स है जो हमको सीखने जरूरी है, जो हम किसी लेक्चर के अंदर कभी आगे चल के कवर करेंगे। ठीक है, जो बेसिक के सेशंस लगेंगे तो तभी हम ये पार्ट कवर करेंगे, ग्राफ रीडिंग एंड ग्राफ डेवलपिंग। चलो तो फिलहाल अभी यहाँ पे हम रुकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द केपलर्स 3 laws we have to talk about in this today's lecture. Now in the next lecture we will talk about the potential energy and the gravitational potential. What is the concept of potential energy and concept of gravitational potential, and how to find out the binding energy of a satellite, and how to find out the escape velocity of any satellite, that we'll discuss next time. Yes. Chalo, thank you all of you. Bye bye. Yes, nice day.